Hello, dear students. This is the lecture number 15. I am teaching you magazine illustrations in your 8th semester. This is your elective course in your thesis semester. You all know about me. I'm Miss Emma, lecturer graphic designer at University of Education, Lowmore Campus, Division of Arts and Social Sciences. This is the topic number 8, magazine illustrations, comics and humor. And I am teaching you magazine illustrations in your 8th semester. As this is your thesis semester, though, so these online lectures on magazine illustrations are very much important for you if you have chosen the topic for your thesis on magazines. इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको किड्स इलस्ट्रेशंस और जो है वो नरेटिव इलस्ट्रेशंस के बारे में बताया था, जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी. दिस इज़ नाउ दी कॉमिक्स एंड ह्यूमर. कॉमिक्स हैं, हमारे कार्टून्स हैं, बच्चों के बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है, और जो ह्यूमर है उसको कहा जाता है तंज़ो मज़ा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट and the most merciful. And may Allah bless all my students with health and prosperity. Ameen. This is the video on magazine illustrations. आप लोगों की याद दहानी के लिए हम एक magazine illustrations की मैं वीडियो प्ले करूँगी, ताकि आप लोगों को illustrations के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए. मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस किड्स के हैं क्या, जो बच्चों की हमारे ड्राइंग्स की जाती हैं, कार्टून्स बेस्ड होती हैं या कॉमिक्स बेस्ड होती हैं, न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स में पब्लिश की जाती हैं, या कवर पेजेस हमारे कॉमिक्स और कार्टून्स के होते हैं. बुक्स जो है वो कार्टून्स और कॉमिक्स में बनाई जाती हैं. दीज आर कॉल्ड दी kids magazine illustrations. So this is a drawing of kids. For the kids magazine illustrations, it has been done with the pen and the ink and with the watercolors. These videos are helpful for your thesis if you are doing the thesis work on the kids magazine illustrations. So this is the good drawings. मैंने आप लोगों को इससे पहले भी illustration based, kids based, image based, travel based बहुत ज़्यादा magazines illustrations में drawings दिखाई हैं. So keep in touch in all my lectures. You can see with the watercolors, it has been done beautifully. ये कार्टून इलस्ट्रेशंस हैं. Drawings done for the kids are called the kids illustrations. What basically is cartoon illustrations? A cartoon is a type of illustration, sometimes animated, typically in a non-realistic or semi-realistic styles. In the 19th century, beginning in Punch magazine in 1843, cartoon came to refer, ironically at first, to humorous illustrations in magazines and newspapers. So these are the cartoon based illustrations. Sometimes they are animated
or they are non-realistic or semi-realistic. पंच मैगज़ीन जो 1843 में पब्लिश हुआ था, उस 19th सेंचुरी में वो उन्होंने कार्टून को रेफ़र किया था और इसको जो है ह्यूमरस स्टाइल में इलस्ट्रेटेड वे में मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स को दिखाया गया था. So this is an example of the cartoon illustrations. कार्टून्स इलस्ट्रेशंस हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है. कार्टून्स हमारे मिकी माउस से, टॉम एंड जेरी से, फिर बैटमैन, निंजा टर्टल्स, हल्क, स्पाइडरमैन, ये सारे हमारे कार्टून बेस्ड है. डोनाल्ड डक है, Popeye the Sailor, Snow White, Cinderella, these are all the cartoon illustrations. And it's basically the narrative cartoon illustrations. So it's a video on the narrative illustrations done for the kids and the comics magazine illustrations. It has been done on the watercolors. Done in the magazines are called the magazine illustrations. This is one of the type of magazine illustrations, comics and humors. So, what is comics and humor? Some illustrators are dedicated to creating graphic humor pieces, which tend to be easy and easiest to understand. They can be single panels or multiple ones. A very popular choice is the four panels form that appears in many web comics. कॉमिक्स और ह्यूमन इलस्ट्रेशंस बेसिकली किड्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं मैगज़ीन्स में, बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में. हर एज के लोग जो हैं वो उसको तंज को या कार्टून्स और कॉमिक्स को बहुत एक्साइटेडली उसको देखते भी हैं. कॉमिक्स बेसिकली क्या हैं, जो भी किसी फोर पैनल्स के अंदर आप लोगों ने पैनल्स में कई दफ़ा न्यूज़पेपर में स्टोरी बेस्ड पैनल्स होते हैं, ड्राइंग्स की जाती हैं कार्टून्स में, उनके जो माउथ के आगे बैलून्स बनाए गए होते हैं और वो एक दूसरे से कॉन्वर्जेशंस में होते हैं. या आपने पैनल्स बेस्ड कार्टून्स न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, मैगज़ीन्स में भी देखे होंगे और बुक्स में भी देखे हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. दीज आर कॉल्ड दी कॉमिक्स एंड ह्यूमर इलस्ट्रेशंस. और ये जो हैं बहुत ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो किए जाते हैं और कई दफ़ा ये कलर्स में भी होते हैं, कई दफ़ा ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड दी कॉमिक्स इलस्ट्रेशंस. These are the image of the comics illustrations.
Cartooning and other forms of illustrations are the most comic image making means in comics. इमेजेस जो बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है सर्कल में या बैलून में जो राइटिंग की जाती है, टेक्स्ट की जाती है, these are very much famous and most common. Comic is a medium used to express narratives or other ideas through images, usually combined with text. It typically takes the form of a sequence of panels of images. Textual devices such as speech balloons, captions can indicate dialogue, narration, sound effects, or other informations. The size and arrangement of panels contribute to narrative pacing. Cartoons and other forms of illustrations are the most common image making means in comics. So these are the comics illustrations. What is the purpose of comics? The pure entertainment value of storytelling through sequential art can be worthy on its own merits. However, the comics can inform, persuade, and encourage new behaviors in the readers. ये जो है रीडर्स को मुतवज्जा करते हैं कि वो कॉमिक्स को देखें, वो इस तरह पैनल बेस्ड, स्टोरी बेस्ड जो हैं बनाए जाते हैं, बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं. Or since the late 20th century, bound volumes such as graphic novels, comic albums have become increasingly common, while online web comics have in the 21st century publications. इनकी हमारे पास के वाट की हिस्ट्री भी है, वो हम फर्दर जो है अपने लेक्चर्स में देख भी चुके हैं. So what are the comics illustrations? Comic illustrations बच्चों के लिए बनाई जाती हैं और इसका जो मेन इसका बनाने का तरीका क्या है कि ये पैनल्स में बनाई जाती है. इसके माउथ के आगे बैलून्स होते हैं जिसमें टेक्स्ट और कैप्शंस लिखे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इनका पर्पस क्या है? इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना हर एज के लोगों को, बस बेसिकली बच्चों को. This is also the example of the comics illustrations. These are the examples of the comics illustrations. Comics is a medium used to express narratives or other ideas through images, usually combined with the text. So this is the end of my lecture number 15. Hope you have understood this lecture very well. और मेरे अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं उनको भी आप ज़रूर देखेंगे. आप अपना फ़ीडबैक्स भी मुझे देते रहिए और जो है मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखिए ताकि आपको अपने जो थीसिस है उसमें हेल्प आउट हो सके. So today this is the end of my lecture. Okay.